In today's episode of Fix Your Finance, we'll meet a millionaire with a 10 crore plus portfolio who has spent more than 2 crores on rent in the last 25 years and still refuses to buy a house. Watch this video till the end क्योंकि इनके financial journey से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं. Hello Bhaskar, welcome to the show. Hi Anshuman. तो अभी आप क्या करते हो? So I am working in an advertising company as a CEO. And आप कौन से space में हो अभी? So I work in media, specifically media planning and buying, where our job is to basically all the ads you see and which annoy you, irritate you and give you joy, we are part of getting it to you. आप कितने साल से job market में हो? So around 24-25 years. And क्या आप इन 25 साल में पूरे टाइम एडवर्टाइजिंग स्पेस में ही थे? So I would say yeah, most of it, like 24 out of 25. तो आप एक चीज बताइए कि 25 साल पहले when you started out in this space, okay, what was your monthly compensation? So I initially started with a 6,000 salary, and then obviously I grew, and I think I remember like, and obviously advertising media कोई join नहीं करता है, so the demand is always there if you have got experience. So I remember like I started working in 98 and by 2002 I was getting 50,000. So like a 10 times salary in like 4 years. And did you have to switch कि वो? हाँ switch करके. 1998 में आप कौन से सिटी में थे? दिल्ली में for 1 दिल्ली में. उसके बाद आपने बताया कि you have stayed in like 8 to 10 cities. Yeah. So कहाँ रहे हो आप बताइए? So Delhi से I moved to Bangalore where I actually joined advertising, and then after 2 years I moved to Mumbai. Mumbai I worked for another 2.5 years in 2 companies, and then I went to Malaysia from there. And from Malaysia, I went to Guangzhou in southern China, and then from there I went to Shanghai, where I stayed most of my life, like 12 years. Okay. And then moved to Singapore for 1.5 years, and then now back to Mumbai. So as of today, what's your CTC and monthly income? So total income, I think from various sources would be around 1.5 crore. Includes rental income which I get. तो आप मुझे टोटल बता दीजिए कि आपके कितने सोर्सेज है. फर्स्ट तो सैलरी हो गई. Salary, हाँ. Is that the biggest portion as of now? Yes. उसके बाद आपका हो गया रेंटल income. जब भी कंपाउंडिंग की बात होती है ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ही कंपाउंडिंग की बात होती है. बट सबसे बड़ा कंपाउंडिंग जो है वो हमारे सैलरी में ही होगा, बिकॉज आज के दिन आप सर्विसेज इंडस्ट्री में हो, आप एड्स बेच रहे हो, राइट? सर्विसेज इंडस्ट्री का इंडिया में ग्रोथ एटलीस्ट 10% होगा. अगर 25 साल में 10% की ग्रोथ पकड़ के चलेंगे, फिर भी आपका अच्छा खासा रिटर्न उधर ही बन रहा है. करेक्ट. राइट. और उसके बाद भी जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, इट्स नॉट जस्ट योर एक्सपीरियंस, यू आर आल्सो अपस्किलिंग योरसेल्फ. राइट. बिकॉज ऑफ व्हिच यू आर, इफ यू आर इन द सेम स्पेस फॉर 20-25 years and if you are not there just for money, as he said, if you keep on upgrading yourself, it's bound to happen that you will end up earning way more than what you would earn at the age of 24 or 25. What you can imagine now, like why would I not imagined at that time कि इतना salary होगा? So it is not even because you don't know how fast the economy will grow, what the opportunities are in that way. So in a way you should not limit your thinking of what you can, in a way imagination. It can be beyond that also. तो ठीक है, ये तो आपकी इनकम की बात हो गई है. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस आर क्यूरियस कि इंसान 10 लाख कमाने के बाद पैसा स्पेंड कैसे करता है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस हाउस. सो यू लिव इन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट? हैव यू बॉट दिस प्लेस और इज इट ऑन रेंट? रेंट. ठीक है, तो इसका रेंट कितना है? अराउंड 240 आई एम पेइंग, राइट? अभी आप 8 महीने पहले इंडिया में आए हो, ठीक है? उसके पहले जहाँ पे भी आप रहते थे, डिड यू ओन हाउसेस देयर? नो, नेवर. क्यों? No, the thing is, first of all, the real estate, if you look at it, it has a internal rate of return of 3% to 4%. I was living in Shanghai, the rate of return on property was 1 or 2%. To give people more context, what is the price of this house? Around 8 crores. 8 crores. और अगर 2.5 लाख रुपए पकड़ के चले 30 lakh. 30 लाख रुपए होता है. ठीक है, तो इसका भी रेट इज बिटवीन 3 to 4%. Between 3 to 5% is optimistic you can make. ऑप्टिमिस्टिक, राइट? बट आप जैसे बोल रहे हो कि इस ये 240 इसका रेंट है, इसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड है? डू यू हैव टू पे एनीथिंग? No. तो मेंटेनेंस इसमें अच्छा खासा होगा. कितना होगा इधर? Around 40,000 होगा. तो उधर ही उनका रिटर्न और भी गिर गया. हाँ, करेक्ट. यू आर काइंड ऑफ इन एन अबंडेंस सिचुएशन. Yes. ठीक है, वेयर इन यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग इन एनी गिवन सिचुएशन. Yes. फिर भी डिडंट यू एवर थिंक ऑफ बाइंग अ हाउस? There are a couple of decisions. One is like the effort to acquire a house, right? So it is about you have to do a lot of research, so that's one. So which is also very taxing. It's not easy. Number two, the thing is the risk attached to it, because
if you just look at the rate of return you get, it's not worth it. You can make much better even putting in debt funds right now. And I think the third thing is that you are locking yourself for a very long time. One of the biggest reasons why you had such a big raise in your income is because you constantly shifted whenever a better opportunity came. ये चीज शायद नहीं हो पाती अगर आपका घर हर जगह पे आपने खरीद के रखा होता. So I think home is a part of a comfort zone, but also I say कि like what are you thinking? Like your vision is about कि मैं इस city में रहूँगा next 20 years, 30 years, so your economic opportunities can be limited. In fact, like I see in Bombay also people are even making calls कि मैं central line में रह रहा हूँ, मैं western line में job नहीं लूँगा. Right? आप अपना circle of economic opportunity is what you're drawing. As soon as you buy a house, the first thing that you're doing is you are letting go of a major chunk of your freedom. आपकी freedom कम हो रही है, आपका movement अब उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना आप एक बिना किसी assets या liabilities के बिना आप रह सकते थे. How do you take care of how do you take care of food, groceries, help, cooks? So I think the second biggest is my daughter goes to international school, so around 12 lakhs is the fees for that school. आपका कार का क्या situation? How do you travel? So I take Uber or Ola every day. आपने कार नहीं ली? हाँ. You can easily afford a 20L car, right? Yes. So what's stopping you from doing that? So again the hassle, right, of buying a car and then getting a driver, getting stuck in traffic and stuff like that. And luckily in Bombay the Uber Ola situation is good enough where you can depend on it. So obviously if the situation was not like होता कि cancel हो रहा है, then I would be forced to buy it. कैसे जाते हो? Traveling में कितना आता है Uber वगैरह में? 10-15,000. 10-15,000, ठीक है. How do you take care of your food? Do you have a help? Yeah, so we have got a full-time maid who gets paid around 20,000. 20,000. Okay, groceries and all कितना होगा? Rest would be like 70-80,000. Would be like grocery, eating out, some other expenses. 70-80,000, which includes all your other expenses. So I'm not tracking it like as a micro level पे कि फूड में कितना है, ईटिंग आउट में कितना, बिकॉज वो मोटा मोटा 10-20 हज़ार ऊपर नीचे ही आता है इन दैट वे. फिर बाद में इसके अलावा वेकेशंस, ट्रैवलिंग, इसका क्या सिचुएशन है? हाँ, तो वी टेक अ हॉलीडे एवरी 3 months 4 months, और फिर कुछ जो स्कूल हॉलीडेज के हिसाब से, तो वी प्लान अ हॉलीडे एंड देन वी गो विद फैमिली. आई ऑल्सो टेक सम सोलो हॉलीडेज ऑल्सो जस्ट टू बैलेंस इट आउट. ठीक है. और आप ऑन एन एवरेज ईयरली बेसिस पे कितना स्पेंड करते हो वेकेशंस में? मे बी 5-6 lakhs वुड बी देयर. 5-6 लाख स्पेंड करते हो, ठीक है. क्या आपके पास अभी क्रेडिट कार्ड है? हाँ, आई हैव जस्ट गॉट अ क्रेडिट कार्ड. तो आप जल्द से जल्द क्रेड डाउनलोड कीजिए, बिकम अ मेंबर, बिकॉज क्रेड हैज कम अप विद दिस एस्केप्स ऑप्शन. ठीक है, जहाँ पे आपको अलग अलग क्यूरेटेड वेकेशन जो बना के देते हैं और उसमें ऑफर्स भी देते हैं, और उसके साथ साथ क्रेड मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस भी है. जैसे कि अभी रिसेंटली गोवा में एक होटल है जिसमें अगर आप बुक करते हो क्रेड एस्केप्स के द्वारा, तो वो लोग हर दिन जितने भी दिन आप रहते हो 4 घंटे आपको हैप्पी आवर्स देते हैं, मतलब फ्री में अल्कोहल भी दे रहे हैं. ठीक है, अल्कोहल इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, बट दिस इज अ गुड ऑफर. सो इफ यू गाइज also use credit cards, download the cred app and explore the escapes option. बहुत अच्छे डील्स वो लोग क्रेड मेंबर्स के लिए दे रहे हैं. क्रेडिट कार्ड आई गॉट, आई हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई जस्ट केम टू इंडिया, और उसके बाद यहाँ पे तो सिविल स्कोर के वाले कुछ होता ही नहीं है, और मेरा सिविल स्कोर इज -1. फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट इज -1 मीन्स नॉट इनफ डेटा. क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है. सो देयरफॉर इट आई हैड वेंट टू फ्यू बैंक्स, एंड जब भी ऐसे लोग मिलते थे ये बैंक से, वो कहते सर आपकी सैलरी में तो मिल ही जाएगा क्रेडिट कार्ड, एंड देन यू शुड गो टू बैक एंड एंड यू शुड अपोलोजाइज कि सर कुछ नहीं हो सकता इन दैट वे. सो दैट वाज अ चैलेंज, एंड इवेंचुअली आई हैड टू पुट अ एफडी टू गेट अ क्रेडिट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, कि अगर आपका सिबिल स्कोर आप बिल्ड नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट हैव क्रेडिट हिस्ट्री, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट लोन्स इवेंचुअली. तो आप ये कर सकते हो कि इफ यू हैव स्टार्टेड लाइक अगर आपने 2-3 साल जॉब वगैरह कर लिया है, तो आप अभी एक कोई एकदम 20-30 हज़ार रुपए वाला कोई लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड ले लो, और हर महीने उसमें एटलीस्ट 2-3 हज़ार रुपए स्पेंड करो, ताकि आपका एक क्रेडिट बिल्ड होते रहे. आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस, ओके, you are left with another 5-6L. Yeah, correct. Right? What do you do with that money? So right now, so because when I came to India, I don't have so much of cash, in that way. So because most of my investments were in mutual funds in that way, so I was just like putting in debt funds so that I at least have some liquid cash available to me in that way. तो आप कितना रनवे या फिर कितना इमरजेंसी फंड पे फोकस करते हो? I try to keep like 10-15% of my thing, which may translate to 1.5 years in like liquid funds. I need to balance my portfolio, so I have invested in equity markets through mutual funds. I have invested in real estate in some other country, and then I'm just building the debt fund so that the
I get more cash flow in that way. So आप कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी में? like I'm regularly, I would say since 2007. उससे पहले वन ऑफ म्यूचुअल फंड खरीद के बेच दिया ऐसा ठीक है। कुछ 2007 में आपकी इनकम कितनी थी? उस समय लाइक आई वुड से उस समय कन्वर्जन रेट बहुत कम था, तो 50 lakhs होगी। 50 lakhs होगी, ठीक है। और उसमें से आप कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, कितना परसेंटेज? आई वॉज इन्वेस्टिंग 30 lakhs। 30 lakhs? Yeah. So you have been saving 50-60% not after making this. आप हमेशा से क्या ये कर रहे थे क्या 50-60%? करेक्ट। तो ये डिसिप्लिन आया कहाँ से? कोई घर की ये फैमिली थिंग है कि क्या है ये? So I think obviously when we grew up, थोड़ा not that we were off money, it's just like for me I find spending money taxing. मतलब शॉपिंग करना वो इतना बोरिंग है, तो यू हैव टू नॉट ओनली योर इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग मनी इज नॉट ओनली अबाउट you're spending money, but it's about you have to make a lot of mental decisions. It's mentally fatiguing. There's a paradox of choice you have to go through. So for me, like I will spend money on things which will give me a long ROI, like watching test cricket, right? एक बार टीवी अच्छा खरीदा, you watch 30 hours of cricket in that way. It is such a this thing in that way. Just like a phone, right? I bought an iPhone in 2007. I've just bought 4 iPhones in last 15 years. ये जो आप बोल रहे हो ना कि 15 साल में 4 फोन यूज किए, ठीक है। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो फोन्स अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, फिर भी 36 months 24 months नो कॉस्ट EMI में फोन्स खरीद रहे। वो मत करो, डोंट कीप अपग्रेडिंग योर फोन्स, ओके। द होल पॉइंट ऑफ एप्पल ने भी यही बोला है कि हमारे फोन इतने अच्छे कि आप 4 साल तक आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स में आपने कभी नहीं किया? Like I'm not personally, like I had bought some stocks long time back when I was out of school, but उसके बाद नहीं किया। ठीक है। So since 2007 you have been consistently investing every month in equity mutual funds, right? SIP शुरू करके आपकी चल रही थी। As of 2023, okay, what is the total mutual fund portfolio size? It's between 5 to 6 crore depending on the daily. I would think कि BSC का मल्टीपल है, वो जितना BS 56,000 होता है तो वो 5.6 करोड़ होता है, तो उस वैसे ही ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो 5-6 करोड़ है। दिस इज ऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स? मे बी 90% होगा, कोई डेट में होगा, ETFs, गोल्ड ETFs आते हैं। गोल्ड ETFs है, ठीक है। उसके बाद आपके जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, वो उसका कितना टोटल है? वो अराउंड 3-4 करोड़ होगा। 3-4 करोड़। वो आपने कब स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना? 2012, ठीक है। एंड व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स? So obviously initially my daughter was born, so we thought that like my wife is from Malaysia, so to have buy there, so that was the initial thing. And then also the rate of return was it was quite good, relatively 5-6% rental yield आ रहा था। wow. And 1-2% appreciation हो रहा था। और आपका जो कैश, इमरजेंसी फंड, ये सब टोटल कितना इक्विवेलेंट होगा? I think it would be around 1 crore. Your total portfolio size as of today is 11 CR, right? मुझे ये जानना है कि अगर किसी 25 साल 30 साल के इंसान को 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है अगले 15-20 सालों में, व्हाट इज द वे टू गो? एक तो इन्वेस्ट करना है सेविंग, बट आई थिंक दे शुड ऑलवेज लुक एट टॉप लाइन कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड टॉप लाइन कैन बी ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर यू हैव, what are the risks you can take, because this is the paradox of life is that every time you think अभी रिस्क नहीं ले सकते, right, but actually and then you look back and say कि यार उस समय तो कोई टेंशन नहीं था। So I think that is even for me also it applies that कि I can say कि अरे अभी तो I have kids and wife, this is not at 40s में रिस्क नहीं लेना चाहिए, but in 60 I will think यार 40s में कितना रिस्क ले सकते हैं, I was healthy। The other thing is you should know your market value। like इंडिया में तो एटलीस्ट पीपल आर वेरी ट्रांसपेरेंट, हर कोई रिश्तेदार से लेके दोस्त सैलरी पूछ ही लेता है, तो बट यू शुड यूज दिस as a market survey in terms of why are people getting more salary with the same skills you have in that way, not for a comparison but look at the opportunity, right? And then that's one, and the other thing is कि उसका ceiling क्या है। For example, I can go and become a restaurant manager and earn double of my, but उसके बाद I cannot grow। If you want to live in your comfort zone कि घर के पास है या ऐसा है या दोस्त हैं या मेरा boss likes me, then you are not going to manage। You cannot be having conflicting goals about this thing। If you want to optimize your cash flow and you think that will get you, and which we know that hygiene factor है, basic level of happiness उसी से आएगा, उसके बाद other things आएंगे, so then you should be focusing on that and think कि अभी I have this goal, I'll achieve it, none of the parameters matter to me। तो एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में कैश फ्लो इज किंग, कैश इज किंग। कैश से आपको फ्रीडम मिलता है और फ्रीडम से आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो भास्कर, ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, जल्द से जल्द क्वेश्चंस के आंसर देना, ठीक है? फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ यू हैड एन अनलिमिटेड बजट
What would you gift your wife? Nothing, the money only. Okay, money, cash prize. वो खुद ही एफर्ट करे ना स्पेंडिंग में. Why should I take the trouble of making decisions? What would you gift yourself? I think I will buy maybe another holiday in like La Manga to play tennis or coaching in a fancy place. पर वो तो अनलिमिटेड बजट नहीं, वो तो आप ऑलरेडी कर पा रहे हो. ऐसी चीज जो आप नहीं कर पाओगे और ऐसा बजट है कि जो अभी नहीं है. Like I don't think I have anything which I would desire कि ये हो जाता. Maybe I'll stop working, but now I'm working out of choice also, so I don't see anything. Unlimited budget से क्या करेंगे? I don't know. ठीक है, आपने ये तो बता ही दिया कि आपका अनलिमिटेड बजट है, ठीक है, बट इस सिचुएशन में आप ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप पैसा कभी खर्च करोगे ही नहीं? Buying luxury watches is something which is overrated. You can look at a time like I have a Apple Watch which is very functional in that way. नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से इफ यू हैव टू बाय अ कार, ठीक है, इन टुडेज टाइम, इन टुडेज सर्कमस्टेंस, आप कौन सी कार खरीदोगे? So I had done this shortlisting. So we had shortlisted MG Hector Plus to buy as such. Okay, which is like 27, 28. Yeah, lakhs. yeah. Your last big purchase. So this sofa we bought. Okay. How much did this cost? 6.5 lakhs. 6.5 lakhs. Yeah. Oh, nice. Yeah. ये तो expensive है, ठीक है. And the last question is, what's one advice, ठीक है, that you would give to everyone out there who is young and wants to eventually become financially independent? You should focus on spending your time which has got more long-term benefits. So whether it is sleep or passion or learning something in that way, and I think and then also put yourself in situations where the multiple is higher rather than blocking yourself in a geography or a job or something like that. Thank you so much for being a part of this show. Thank you so much for watching this video, guys. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, then hit the like button. Also, if you want people like Bhaskar to share their experience in the show, तो comment करो more such profiles, और हम हर हफ्ते ऐसे एक दो वीडियोस करते रहेंगे. If you are new to the channel, then consider subscribing, and thanks to Cred for sponsoring this video. Goodbye.